हाँ. So no one even actually helped me. Is it not the difference between the target and the sum of sales? This 1.33. Correct, right? एक बार difference करके देखो. I think you'll get same thing, right? Three point. एक सेकंड. Yes, shall I start? You understood, right? So 1.33 का ऐसे just prove the difference between this sum of sales versus target. So ये आपका target बता रहा है, okay? 25K, it's in K, just make this in millions and whatever it is. And goal 1.33 बता रहा है कि we need to reach this particular goal. मतलब ये difference बता रहा है, okay? So what is your subtraction between your sum of sales versus target sales? If I'm not wrong, I think A चीज़ बता रहा है. Let me just do it. 3,297,200 minus. Yeah, shall I start? So let's build this. Yeah, 1 million. Yeah, yeah. I checked it, sort of. It's showing 1.33. I'll see. Okay. I thought like it's a difference because it was almost near, right? Need to check. Okay. So what is visual doing? Anyways. Okay. So let's build this in just 5 minutes. I want you to build in 5 minutes. Will you do this? ये में कोई difficulty नहीं है. So can you tell which chart we are using? Okay, we'll start. What is this chart? So what is this visual? ये कौन सा visual है? This. This. कौन सा visual है?
Slicer, good. What about this? ये आप कैसे बनाओगे? How will create this? हाँ. How will create this? Card, good. What about this? What about this? Matrix, table, table matrix, good. ठीक है. Is it matrix, not table? हाँ. What about this? Line chart, ठीक है. What about this? Pie chart. What about this? Donut chart. What about this? Bar graph. Okay, we'll create it. 5 minutes. Okay. Just a practice. I'm like, I want you to do exact practice. Okay. So this is some store mega mart. Okay. I'm going to share the data set. इसमें एक data set है called mega store data set. You can even I'll attach this. You can add this as a icon. Okay. So this is just a hello world kind of हम first time कर रहे हैं because you're building first time. Let's try to replicate okay what we have. So later हम we're gonna understand like what could be the proper way. Okay. Well, because whenever you're creating some sort of charts, always you'll get a what requirements from the client. Okay, आप randomly नहीं बनाओगे. So if the client wants to know what is the profit by category or region, yeah, specifically they'll get let to know. Okay, but right now we are practicing. Let's try to replicate this. So for that, let me upload the data set. I think a data set इसके अंदर है नहीं. Let me just check it. Let me open this sheet, and there is something called Power BI resources. और उस Power BI resources के अंदर we don't have, correct? So I'm gonna upload a folder. ओके. सो प्लीज़ ओपन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. और उसके अंदर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा मेगा मार्ट. उसके अंदर आपको डेटा शीट आइकन ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, इवन दैट पीडीएफ ऑल्सो, सो दैट you'll have an handy like what you're replicating it. Okay. This I'm gonna share this in chat also. Fine. So this is the link. All right. So let me refresh. नहीं आया क्या? क्या वो? No permission. Okay, just a second. Power BI resources. Yeah, Saurabh. I mean, like they'll see there'll be a set of team. Okay, I mean, like they as a analyst you will be getting any guidance of like what kind of clients are looking for. I mean, like for the specific thing, like what they're actually they see want to. जैसे आपके अलग अलग dashboards होते हैं, ठीक है? Uh, I'll show you. So here what I'm showing is more kind of a realistic example. So for example, assume like this is what the expected data or the expected dashboard the client is looking for. Okay, so इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे because of the domain. जैसे for example, they're asking us to show the total revenue, okay, total expenses, gross profit, net cash position, working capital, total outstanding, okay, then data quality scores. Okay, so फिर this is your profit and loss dashboard जिसको हम income statements भी बोलते हैं. Okay, revenue by category, then we have something called COGS. So whenever you're reading this, if you don't know this, right, you're not able to do it. Okay. So why I'm showing it, this is a more realistic example. You can see this is like more of real company based. जहाँ पर they are expecting us to show some sort of a dashboard based on this metrics. Okay. So this is your metrics. Okay. तो right now जो हम कर रहे हैं, it's like see this and that is totally different. Okay, so there you are just learning. Okay, अब जहाँ पर आप basic देख रहे हो, the flow of how the categories versus sales profit ये सारी चीज़ें. बट ज़्यादातर जब आप डैक्स एक्सप्रेशन के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे, सो दे विल बी क्रिएटिंग योर ओन मेट्रिक्सेस बिकॉज डायरेक्टली आपके डेटा से सारा
matrices automatically calculate करके नहीं आता है, right? You need to derive some new columns, you need to create your own matrices, then only you'll able to build this kind of dashboards. So this is related to more finance based. So I'm just to give an idea, आप देख सकते हो कि कितने तरीके के अलग अलग डैशबोर्ड होते हैं. जैसे we have something called executive finance dashboard, profit loss, balance sheet, right? Flow cash. Okay, I have not it, guys. I'll upload the data. Just hold on. Receivables, right? Receivables collection dashboard, payables payment dashboard, okay, bank treasury dashboard, okay, procurement PO dashboard. If you don't know what is PO and all sort of things, you'll not understand, right? Sales pipeline and revenue dashboard, okay, inventory and stock dashboard, right? So this is your more realistic examples or more realistic dashboard जो आपको display करना है in your this, okay. So do you think learning Power BI is important or learning this is important? So this is important. Okay. So this, if you don't know, right? So how, what you'll do using Power BI? If you don't know what is net profit, you don't know what is net profit, what you'll do it? I mean, like bar graph, this is very simple to understand, but you don't know the understanding of domain. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज सेलेक्ट योर डोमेन. मतलब आपके कोई तो इंटरेस्ट होगा, राइट? वेदर यू आर फ्रॉम स्पोर्ट्स, वेदर इट्स हेल्थ में, या कोई भी फिनांस हो, रिटेल हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी एक हो सकता है, राइट? आई मीन लाइक एज एन इंटरेस्ट, because unless you have the interest in specific domain, it is very difficult you to get through it in some jobs, okay? Because trust me, apart from your different skills, this skills is very very important, okay. Let me upload first drive, okay. So सारे उसमें searched हैं, ठीक है. I'll go. I'm uploading, guys, okay. वो काम नहीं किया because I don't have access there. Power BI resources. What is happening? एक second. Okay, so directly I'll share you काम new कर रहा है. I don't know what is happening. Okay, anyways, I'll directly I'm sharing one data set, and reference के लिए I'm sharing that PDF also. Okay. See Megamart, please go and refresh the drive and some PNG. अगर आपको logo add करना है, we can add the logo also. Okay. So I've shared it. Please go and open it. All right. So now, what I'll do is, so इसको हम जल्दी से बनाते हैं because we'll go for DAX now, because already we have some learn visual, तो आपको एक idea मिलेगा like how to do it. So what I'll do is, अब हमारा what I thought, please learn the replica, okay? So पहले आप replicas बनाओ exactly. If you are new to this, आप replica ही बनाना start करो, ठीक है? Then you start. See, when I say replica, understand what they're actually showing, what kind of metrics. Okay, so first they're asking us to, okay, so let's start with the label itself. Okay, Megamart profit report. So what I'll do, I'll go here. So we have, see, ये सारी चीज़ें visuals में नहीं आता है. जैसे for example, in your home section, so there is something called, okay, in the insert section, ज़्यादातर आपके text buttons, shapes, images add कर सकते हो. Okay, if you go to your insert, so insert के अंदर आप देख सकते हो, we have something called text box, we have something called buttons, we have shapes, we have images. Okay, what I'll do is, let me just go and add here one single shape here. Okay, so yeah, text box भी add कर सकते हो. So if you add a text box, so here you can write your text. So what was the text? So text was to create what sales? Sorry, not sales. So Mega Mart profit report. So let me just go and create it. So Mega Mart profit report. Uh, Ankit, that thing I can't share it because this is more or else I'll go jail. Okay, if I show that things, I just showed you here, but I can't share it. Okay, fine. So I'll increase the size 24. Okay.
So here I'll make it center. Formatting में I'll just not spend time because ये automatically आप ये सारी चीज़ें कर लेना. I want to make it center. ठीक है, इसका आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो. दिस इज योर बोल्ड, अंडरलाइन, डोंट वांट इट, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ठीक है. सो दिस इज योर टेक्सटाइल. ओके, सो इट वुड बी मोर गुड अगर आप इसके शेप भी डालोगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू एडिंग अ शेप, तो आप शेप के अंदर से भी, शेप के अंदर भी आप लिख सकते हो. ठीक है, यू कैन ऐड अ टेक्स्ट इनसाइड दिस. आई थिंक टेक्स्ट नहीं है. ठीक है, नो, सेंड बैक नहीं है. ओके, ये सारी चीज़ें विल नॉट डू इट, विल इट जस्ट अ टाइम वेस्ट. ओके, टाइम वेस्ट इन द सेंस इफ सारे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो. ओके, यू हैव ऑल द ऑप्शंस यू वॉरी. सो आई हैव एडेड अ लेबल हियर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज लेट्स स्टार्ट विद द थ्री matrices which I want to show it. इसके लिए I need a data first of all, correct? So what I'll do, I'll go to my home and I'll say here get data. So Excel workbook, एक्सेल वर्कबुक, और एक्सेल वर्कबुक के अंदर मैंने मेगा मार्ट करके एक डेटा है, सेम ई कॉमर्स जो हमने अभी डील किया है ना, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ डेटा. So I'll open here mega store data set. Let me click on open. So now it will load here. So you can see the same name जो आप जिस नेम से आप लोड कर रहे हो, कैन सी हियर. ओके, इसके अंदर भी सेम ही है. ओके, सो वी हैव ऑर्डर्स. लेट मी जस्ट टेक ओनली द ऑर्डर्स हियर. नाम तो सेम हो जाएगा, राइट? सो ओके, लेट मी जस्ट लोड इट, लेट्स सी. सो आई क्लिक ऑन लोड. वो ऑर्डर वन से आ जाएगा शायद नाम ऑटोमेटिकली. आप सेम डेटा सेट भी यूज़ कर सकते हो. आई थिंक इट्स द सेम डेटा इटसेल्फ. ओके, मेगा मार्ट का जो आप यूज़ कर रहे थे, इट्स सेम डेटा. ठीक है, यू कैन सी आई गॉट सम ऑर्डर्स टू. सो इसके अंदर, सो यू हैव ऑल द डेटा, सेम थिंग. ओके, इट्स ऑलमोस्ट सेम गाइज. ओके, तो आप उसी डेटा सेट में काम करो. फाइन. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शो द टोटल सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट. ओके, सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस कार्ड ओवर हियर इंडिविजुअली. एक कार्ड में आप तीन कार्ड्स बना सकते हो, और लेट्स गो दैट वे इटसेल्फ. सो इन द वैल्यू आई वांट टू शो द टोटल सेल्स. ओके, अभी सम ऑफ सेल्स आ रहा है, इज अ बैड प्रैक्टिस, इसलिए हमेशा आपको मेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जो विच विल लर्न लेटर. ओके, सो दिस सम ऑफ सेल्स, सो सम ऑफ प्रॉफिट, एंड इवन आई वांट टू सी द टोटल क्वांटिटी. ओके, सो दिस इज योर थ्री कार्ड्स, यू गॉट इट. फाइन. इसका आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. सो कार्ड्स के लिए I'll do some just background different color, okay, golden color या ब्लू कलर जो उन्होंने दिखाया. ओके, सो कैन पुट दैट सेम कलर, या आप सेपरेट भी कर सकते हो, बट आई हैव एडेड टुगेदर. ओके, नेक्स्ट मुझे प्रॉफिट बाय कैटेगरी दिखाना है. अब ये तीन आ गए, सी 1.3, 2 175. आई थिंक वी आर गेटिंग एग्जैक्टली सेम थिंग, राइट? 2.3, हाँ, डेटा सेट के हिसाब से. ओके, आई एम गेटिंग 38 के टोटल क्वांटिटीज. ओके, सो दिस इज योर कार्ड्स. ओके, सो दिस इज योर कार्ड. So next, पहले हम सारे plot कर लेंगे, then we'll go and do the arrangements. Okay, so I want to see the profit by category. Okay, profit by category and profit by region. So profit by category मुझे देखना है. So I'm going to use which visual? Pie chart. So this is my pie chart. Sorry, Control Z. So I'll come out, I'll select this pie chart. So in the pie chart, I want to add legend and values. So profit by, profit के अंदर हम values add करेंगे by category. तो हमारे तीन categories हैं, और तीन categories के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, right? So this is your pie chart. तो हम क्या करेंगे? So always आपको legends on नहीं करना है. So always it good to turn off the legend. आप डिटेल लेबल में जाके इसको ऑल कर दो, सो दैट यू कैन सी ऑल द डिटेल लेबल्स. तो आप ये लेजेंड को रिमूव कर सकते हो. ठीक है, सो आई एम गोना जस्ट अरेंज इट एज पर हाउ आई नीड इट. लेट मी जस्ट डू दिस वे इटसेल्फ. हाँ, ओके, सो नेक्स्ट इट वाज टू ऐड प्रॉफिट बाय रीजन, प्रॉफिट बाय सेगमेंट. प्रॉफिट का ही करेंगे. सो लेट मी जस्ट कम आउट. प्रॉफिट बाय, या इसको कॉपी पेस्ट करके यू कैन चेंज इट. ओके, सो प्रॉफिट बाय सेगमेंट, वेर इज सेगमेंट? सो वी हैव सेगमेंट हियर. सो दिस योर प्रॉफिट बाय सेगमेंट. इसको भी हम लेजेंड रिमूव कर देंगे बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग स्पेस, एंड इधर ही आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, राइट? टर्न इट ऑफ. आई गो हियर एंड इन द डिटेल लेबल आई शो ऑल लेबल्स, सो दैट सारा डिटेल दिखाई देगा. फाइन. ये ऊपर वाला जो टाइटल्स, आई होप यू नो हाउ टू चेंज ऑल दिस टाइटल्स. ओके, यू कैन रिमूव द टाइटल्स एंड वॉट एवर यू वांटेड. इसको प्लेस इधर करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इट वॉज बाय रीजन, राइट? प्रॉफिट बाय रीजन. तो बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ प्रॉफिट रिपोर्ट, so सारा हमारा प्रॉफिट के हिसाब से ही है. ठीक है, सो आई क्रिएट अ प्रॉफिट. So same way, I'll go and this time let's make a donut chart. Okay. So donut chart के लिए I'll add same legend. So this will be region. So and the sum of profit. Okay.
सो पाई और डोनट ये तीनों एक ही इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके. So here I'll turn off legend, and in the data labels I'll enable all. Okay. Okay. So formatting, please, it will take a longer time because formatting ये सारे चीज़ें it will take longer time. तो आप अच्छे से करो, ठीक है. Okay. So next is I want what? I want sum of profit by subcategories. Okay. बार ग्राफ करेंगे sum of profit by subcategories. So subcategories के हिसाब से हम एक चार्ट बनाएंगे. So we have subcategories inside because this is your bar graph, right? So bar graph आपका y axis categories रहेगा and profit. ये सारा प्रॉफिट के चार्ट प्रॉफिट एनालिसिस है. यू कैन सी हियर प्रॉफिट. ठीक है. सो दिस इज योर. ओके. इफ यू वांट यू कैन इनेबल द डेटा लेबल्स. ए लेजेंड क्यों इधर ग्रे डॉट दिखा रहे? बिकॉज वी हैव डिक्रीज द साइज. ओके. तो इफ यू इंक्रीज द साइज विल अंडरस्टैंड इट. डेटा लेबल्स. ओके. फाइन. सो नेक्स्ट लेट मी जस्ट ऐड द स्लाइसर सिटी. ओके. हम स्लाइसर ऐड करेंगे फॉर द सिटी. So we have the slicer icon here. Okay. And the slicer will be for cities. So we have state, we have city. Okay. See, Abhi, you can do like this. Abhi zyada expand karega. So what is a good approach? You just go and do the changing in the slicer settings. Instead of vertical list, आप drop down कर दो. Okay. So that whenever they need something, they can select the drop down. तो अभी for example, I want to see for some Allen city. Okay. अभी Allen city का update हो रहा है. ठीक है. If you want to see for Allen town, yeah, Allen town का update हो रहा है. Okay. So this is what your slicer is. Fine. So then ये सारा अगर आपको color change करना है, okay, go to format, please change the settings of. Okay. ठीक है. सो अभी नेक्स्ट मुझे क्या ऐड करना है? सो प्रॉफिट बाय ईयर, मुझे ईयर के हिसाब से प्रॉफिट देखना है. सो वी हैव ए लाइन चार्ट फॉर दिस. आई होप यू आर सीइंग लाइक हाउ आई एम डूइंग इट. ओके. ओके. सो सी ये एक्टिविटीज आप डेली करो. ट्रस्ट मी, दिस विल लर्न मेनी फॉर्मेटिंग टेक्निक्स. इनिशियली आप एटलीस्ट 10 रिपोर्ट देख के बनाओ. देख के, नॉट विदाउट सीइंग. देख देख के, मतलब उन्होंने मेट्रिसेस कैसे रखा है, उन्होंने कैसे फॉर्मेटिंग लगाया है. सी इसके अंदर आप इमेजेस ऐड करो. इट विल लुक मोर गुड, राइट? बैकग्राउंड. ओके. ये सारी चीज़ें यू कैन डू इट. Fine. So I want to see the profit vices over the period of time, right? So पहले हम profit का drag करेंगे in my y axis because हमारा y axis के अंदर एक ये रहेगा. And I want to see with respect to my date hierarchy automatically create होता है. Let's see with respect to months. Okay. Yeah. So you can see the trend how it is moving. Okay. So if you see, right, so there'll be very few people who will be doing a lot of formatting. मतलब formatting से बहुत अच्छा होता है. Like changing a background color as a blackish. ठीक है. फिर इसका अरे हर एक का what they'll do is, so they'll add some like this of rectangles. I'll show the tricks also. मतलब ये जो आप देखोगे like in the internet वो जो लोग बनाते हैं, right? So what they do is they add this kind of background images. इसको send back करेंगे एक second. इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहे. They'll do it in I'll tell the tricks also. Okay. They do it in where? PowerPoint. I'll tell how they do it. Okay. एक template बनाते हैं. Okay. So they do all the templating in Power BI, sorry, in the PowerPoint. PowerPoint बहुत सारा template designs देता है and they using this. इसमें भी बहुत सारे designs हैं. So if you go to your view section, आपको एक custom theme मिलेगा. See, this is your custom themes. अगर मैं कोई भी एक dark theme में जा रहा हूँ, you can see automatically gets changed. ओके. सो कैसे था कैसे हो गया, राइट? यू गॉट कन्वर्टेड टू एवरीथिंग. ये इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन है बिकॉज अब सी नाउ दिस आई नीड टू चेंज इट. सो आई दिस कलर अच्छे से ठीक नहीं कर रहा है, राइट? आई गो हियर, आई मेक इट कार्ड बिकॉज ये कार्ड का मुझे चेंज करना है. सो बैकग्राउंड आई कैन मेक इट मोर अप्रोप्रिएट लाइक वाइटिश. ठीक है. अभी मुझे अब ये सारे नंबर चेंज करेंगे तो इसलिए बेटर आई डू इट सम येलो कलर. हाँ ऐसे ठीक है. गाइज अंडरस्टैंडिंग? सो अगर आपको ये थीम नहीं चाहिए, सो अज्यूम लाइक दिस थीम इज नॉट गुड, नॉट लुकिंग गुड, गो विद डिफरेंट थीम्स. ये ऑटोमेटिकली थीम्स बनता है बट दिस नॉट ए ट्रिक. सो ट्रिक इज योर पावर पॉइंट. सो पावर पॉइंट में एक अच्छे से आप कोई भी एक स्पेसिफिक क्या एक स्पेसिफिक टेम्पलेट बना सकते हो. सो व्हाट इज योर प्लेस होल्डर फॉर योर चार्ट्स एंड यू कैन मूव अहेड. फाइन. ओके. सो नेक्स्ट वी कैन ऐड अ टेबल, राइट? सो सी अभी स्पेस का कंस्ट्रेंट आ रहा है. वी हैव एडेड ऑल दिस थिंग्स.
even we have added this, even added this. अब बचा है this one, right? So अब ये metrics पूछा है, so can we fix the metrics over here? No. Okay, so what I'll do is, so इसको हम इधर place करेंगे, okay, so that I can see along with the slices ये सारे चीज़ें, see ये सारे आपको you need to do it, I mean like this formatting, fonts, I'm doing it quickly, okay, काम और एक कहाँ गया, और एक कहाँ चले गया, did I delete it by mistake? क्या हो गया, एक्सेंट, where is one more, okay, anyways, इसको हम इधर, हाँ इधर है, सॉरी, ओके, कैन वी प्लेस मैट्रिक्स ओवर हियर, हाँ इधर मैट्रिक्स प्लेस कर सकते हैं, सो हियर लेट्स वी कैन डू इट और नॉट, ओके, सो मैट्रिक्स के लिए, सो आई देर आस्किंग द प्रॉफिट वॉर सब कैट, सी ऑलरेडी एक डुप्लीकेट डेटा है बिकॉज ऑलरेडी आई एम शोइंग सब कैटेगरी वर्सेस ये, बट देर रीजिंग रीजन वर्सेस सब कैटेगरी का सारा वो डिटेल्ड मैट्रिक्स देख रहे हैं, सो आई एम गोइंग सेलेक्ट हियर द मैट्रिक्स, वेयर इज दैट, सो दिस इज योर मैट्रिक्स, एंड सो हियर यू कैन, आई एम एडिंग बिकॉज मैट्रिक्स के अंदर आपको सब कैटेगरी वर्सेस या इंस्टेड लेट्स गो विद कैटेगरी, ओके, बहुत सारा वैल्यूज है, सो आई ऐड दैट इन योर रोज, एंड रीजन कहाँ पर है रीजन, सो दिस इज योर रीजन, ओके, कॉलम्स और वैल्यूज मुझे देखना है सारा प्रॉफिट, ओके, सो दिस विल एक्चुअली लुक गुड, ओके, तो यू कैन गो एंड चेंज योर फॉर्मेटिंग, जैसे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, नॉट प्रॉपर्टीज, स्टाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको मिनिमल चाहिए या वॉट एवर, या रोज, बोल्ड रोज, या अल्टरनेटिंग, आई थिंक दिस इज गुड, ओके, तो अभी साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, सो आई थिंक लाइक नाउ वी हैव मोर एनफ स्पेस टू ऐड अदर विजुअल आल्सो, राइट, so this is how you gonna design it, got it, ठीक है, ऑलरेडी हमने सारे चार्ट्स को ऐड कर दिया है, सो डिजाइनिंग फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ऐड सम अदर मैट्रिक्स जस्ट गो एंड ऐड इट, ऑटोमेटिकली सारे अपडेट हो रहे हैं, फाइन, सो आप इमेजेस कैसे ऐड करोगे, सो अगर आपको थीम अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाट विल डू, यू कैन गो एंड अपडेट योर थीम्स, ओके, सो आई वांट टू गो विद लाइट थीम, लेट मेक इट एवरीथिंग लाइट, okay, so if you want some other color themes just go and select, so appropriately जो आप color theme select करोगे it will automatically get reflected over here, fine, so I think like अब हम इसको इधर ही place करेंगे, so I'll place it here itself, and ये इधर कर लेंगे, ठीक है, and at least we can expand this slicer, slicer setting में जाके हम इसको slicer settings हम इसका करेंगे vertical list, okay, so now at least you can drag and drop like this, ओके, सो इफ यू वांट टू ऐड दैट लोगो जो हमने लोगो ऐड किया, राइट, अगर आपको इधर प्लेस करना है, सो व्हाट विल डू, सो गो टू इंसर्ट, हर हमेशा अगर आपको कुछ ऐड करना है गो टू योर इंसर्ट, एंड हियर वी हैव इमेजेस, राइट, सो ऑलवेज इमेज, अब मुझे इमेज ऐड करना है, सो इमेज एक्शन, टर्न इट ऑन, इमेज, इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, नॉट बुक मार्क, ठीक है, सो डेस्टिनेशन पेज 23, ठीक है, सम रैंडम, तो इस पे आप लिंक लगा सकते हो, आई मीन लाइक समवन इज क्लिकिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर लिंक, सो इट विल नेविगेट टू सम योर वेबसाइट ऐसे कुछ, ठीक है, सो हियर यू कैन प्लेस इट, फाइन, सो आई थिंक वी टुक मोर देन 10 minutes, ओके, सो आई होप यू गॉट एन ओवरऑल आइडिया, ठीक है, सो पहले इनिशियली आप क्या करोगे, प्लीज ट्राई टू मेक अ एप्लीकेशन, डाउनलोड सम डेटा फ्रॉम कैगल, ठीक है, क्लीन डेटा सेट्स, अभी इनिशियली आप सारा क्लीनिंग मत करो, प्रैक्टिस, so just try to create a very good visuals, okay, just by replicating it, okay, once you got an idea मतलब how to place and how to build all this particular charts, okay, in that you learn it, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, like how to
enable some data, ठीक है, how to disable some information, से सारे चीज़ें you can actually learn it by doing this kind of multiple reports building. Yes, will you do it? ठीक है. So we'll start with something very very important. ये हम करेंगे, ठीक है. So after DAX also we'll do it multiple times. So right now you should know what all things you should know. So you should know the basics of Power BI. What is the meaning of Power BI? इसके basic components कौन से हैं? We have Power BI desktop, Power BI service. और next important thing is you should know how to download Power BI. ये हमको पता है. Download होने के बाद you should know like how to get the data in Power BI, which is very very important. तो आप data कोई से place से भी लेके आ सकते हो. So mostly it will be data warehouses or the databases. अगर आप इस data लेके आ रहे हो, we know what the connection method is, direct and import. Once you know this, then आपको सारे views पता होना है, right? So हमारे पास एक report view है, then we have a table view, then we have a modeling view. अगर आपको दो tables के बीच में या दो data sets के बीच में कुछ relationship build करना है, can go to model view and build a relationship, one to many, many to many, right? ये सारे relation build कर सकते हो. So then even you should know about द बेसिक्स ऑफ विजुअल्स, राइट? आप कौन से विजुअल्स यूज करोगे फॉर सम यूज केसेस. तो जितना हमने पढ़ा है, जस्ट ट्राई टू रिवाइज ओनली द सेम थिंग. ठीक है, अगर आपको इतना बेसिक पता है, राइट, सो स्लोली विल गिन कीप ऑन लर्निंग एंड अपग्रेडिंग योर स्किल्स. तो आप सारे एक साथ सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हो. सो स्लोली इफ यू कीप ऑन लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग, ओके, यू विल गेट टू नो मेनी मेनी थिंग्स. जैसे मैंने इसमें कुछ चीज़ें नहीं बताया. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कीप ओनली कॉपियर्स एंड आई वॉन्ट टू रिमूव द अदर थिंग. ओके, इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन है. सो इफ आई टेल हियर एक्सक्लूड, अभी क्या करेगा, कॉपियर चले गया. ओके, नाउ आई गॉट ओनली द फोन्स. Okay, that thing, same thing you can see in the filter also. See, excluded. So there are so many things to learn. Okay, so सारी चीजें आप slowly सीखोगे. But right now, this basics you should know. Okay, so at least kind of hello world of report building. आपका hello world report है. Okay, so where you're building some cards. Okay, some visuals, bar graph. Okay, line charts. Okay, your slicers and all sort of things. And when you click on any of this, it's working smoother. Yes. ठीक है. सो कीपिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, सो विल स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड डैक्स. सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, सो डैक्स इज समथिंग जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल फील डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बिकॉज ये सारी चीज़ें यू कैन नॉट क्रिएट इन सिमुलेशन. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके उस वो सीखने के लिए आपको सारा डोमेन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. बट विल लर्न लाइक व्हाट इज हाउ टू क्रिएट अ फॉर्मूलाज, हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज. आगे चल के अगर आपको कोई भी मेट्रिक बनाना है, यू कैन एक्चुअली यूज द सेम टेक्निक्स. Okay, so first let me start with understanding of what actually the meaning of DAX is. Okay, so any idea, like आपने नाम सुना है Power BI के अंदर, what is the meaning of DAX or heard anything about the DAX before? No, ठीक है. Okay, so please write down. ये आपके notes के अंदर नहीं है. If you want this particular notes, I'll share it at the end of the class. Okay, so we have something called DAX. What is the full form of DAX? So DAX stands for Data Analysis Expressions. Data Analysis Data Analysis Expressions. Please concentrate. That's what I told, right? So many people get difficult in understanding this topic. तो इसलिए मैं आपको पहले ही वो warning sign दे रहा हूँ. Please concentrate. So it stands for data analysis expressions. So what is the meaning of this? So you can write like this. So data analysis expressions का मतलब क्या है? So it is just a kind of a library of a functions. So it is a library. It is a library of functions. Okay, and operators and operators that, so that can be combined, that can be combined combined to build formulas, to build formulas. So in the Excel you have learned how to build the formulas, right? Sum function, average functions are formulas, the inbuilt functions, right? So here I can't say it is exactly like Excel. So it's like more of a language itself. Okay, so do you know internally Power BI कौन सा language use करता है? Any idea about M language? I'll tell that also later. ठीक है, there is something called M language. Okay, what is M language? अगर आपने नहीं देखा है, so if you have go and checked in the Power Query Editor, जो आप changes कर रहे हो, internally it is writing a M language to make updates. आपने कभी देखा है like automatically it creates some sort of expression somewhere? ठीक है, I'll show that. Okay. So okay, so coming back here, what is DAX? DAX stands for Data Analysis Expressions. ये सारे expressions हैं. So what is this? It's like a library of all the functions and the operators that can be combined to build the formulas and expressions. And expressions. So what is the meaning of expression? Like A plus B is also expression, right? So अगर आपको कोई भी एक नया matrix बनाना है, okay, from for your business, okay, business matrices, so they're going to use a DAX expressions to build that, okay? So and expressions used by Microsoft BI tools, used by Microsoft BI tools. Okay, so इसको हम function language भी बोलते हैं. Okay, so this is like important point.
So even we can tell that DAX is also known as a function language. Okay, function language. इसका मतलब क्या है? So where all your code is inside some function, where all the code all the code is kept inside a function, is kept inside a function. Okay, inside a function. So now to learn more about the DAX, okay, so पहले हम सीखेंगे something called calculated column and something called measures. Okay, please concentrate. So I'll open some sample data. So this is my data right now, right? So जो हमने अभी load किया है, if you go to your table view, so जो भी आप इधर देख रहे हो, so this is your actual data which is coming from your data source, correct? So जहाँ पर we have something called row ID, order date, ship mode, right? Customer ID, customer name, all these are things your what you have your actual data. ठीक है. So now you're learning very important concept, something called calculated column and measure. Okay. So what is a calculated column? पहले हम उसको सीखेंगे. So calculated column का मतलब होता है you are creating some new derived column. What is the meaning of derived column? Derived column का मतलब क्या है? What is derived column? हाँ, like profit, already profit is there. हाँ, अगर आपको profit नहीं था, ठीक है, automatically want to calculate a profit. Okay, automatically want to calculate a profit. Okay, let's see if we have some ship date. Uh, order date. हाँ, see, we have something called order date, ship date. अब मुझे order processing time जानना है. What is meaning of order processing time? See, concentrate. ये सारे आपके business perspective से आते हैं सारी चीजें. This is something where you use this business matrices. ये सारे जैसे हमने सीखा, it's not like that. Okay. See, now we have order date. What is meaning of order date? Order date का मतलब क्या है? जिस दिन order हुआ है, correct? What is ship date? जिस दिन delivered हुआ है. अगर मुझे जानना है कि हर एक ऑर्डर के लिए कितना प्रोसेसिंग टाइम है, तो आप क्या करोगे? इफ यू वांट टू कैलकुलेट ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम, वेरी गुड, ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट. तो हम रिवर्स लेंगे, शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट, ग्रेटर, राइट? पहला आपका ग्रेटर, सबट्रैक्ट, शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट. सो जब आप ये नए कॉलम्स बनाओगे, ओके, फॉर एग्जांपल, सो व्हेन यू गो एंड क्रिएट ए न्यू कॉलम, तो मैं ये कॉलम कहां पर बना रहा हूं? इन द पावर बीआई itself, नॉट इन योर पावर क्वेरी. उधर भी बना सकते हैं, बट हियर आई एम डूइंग इन योर टेबल व्यू. ओके, सो वंस यू गो योर टेबल व्यू, आपके कुछ चीजें लाइक यू कैन सी इन द रिबन, कुछ चीजें इनेबल होता है, ठीक है? सो वी हैव समथिंग कॉल्ड न्यू मेजर, क्विक मेजर, वी हैव समथिंग कॉल्ड न्यू कॉलम. So I'm creating a calculated column. Calculated column का मतलब क्या है? I'm creating some derived column which is coming from your existing table. I'll click on calculated column. So जैसे आप इस पे click करोगे, you can see now it will make a space to create some new column for your data set. Okay. See already एक column का नाम दे दिया है. So right now it's column. Let me just rename. Okay, पहले इसका एक formula लिख देते हैं. So what I'll do, I want to know the order processing time. तो इस column का नाम हम देंगे order processing time. Okay. So order processing time. So order processing time calculate करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? So I want the ship date minus order date. So if I start writing like this, see automatically आपको suggestion आएंगे. How you read this? ये बता रहा है कि orders table के अंदर आपका एक ship date है, उसको ले लो. I'll put tab minus. Okay. So similarly we have the order date, right? I'll say here order date. So automatically आपको आ रहा है order days. Orders के अंदर order date. Tab. सेम फॉर्मूला, यस. ओके, सो ये क्या बता रहा है? सो टेक दिस ऑर्डर शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट. ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली, ठीक है, सो लेट मी जस्ट गो विद दिस. आई क्लिक ऑन इनेबल इट. लेट्स मी व्हाट आई गेट इट. ओके, आई एम गेटिंग some number. I think it's not appropriate, correct? 1414900 दिखा रहा है. लेट मी मेक दिस एज अ डे. एक सेकेंड. हियर टेबल टूल्स के अंदर, एक सेकेंड डेटा टाइप इधर चेंज कर सकते हैं. नो, नॉट डेट डिफ. हाँ, डेट डिफ फंक्शन, आई डोंट नो इफ यू हैव डेट डिफ हियर. ओके, एक सेकेंड. लेट्स सी फर्स्ट डेटा वाला जो हम डेटा लिया, 2018 जुलाई 2022. ये क्या दे रहा है फिर? एक सेकेंड, लेट मी फिक्स दिस.
Orders, order date, dot date. I'll tell what is that, okay? Let me first get correct answer. I'm getting correct now? No, right? इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं, एक सेकेंड. आई डोंट व्हाट इज डेटा टाइप. हम क्या करेंगे, लेट मी फर्स्ट सेलेक्ट व्हाट इज अ डेट. ये फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट ये क्या, लेट देखते हैं. ओके, डेट फॉर्मेट ये. सो लेट मी सी हियर आल्सो. प्रोसेसिंग टाइम. लेकिन मुझे गलत आंसर आ रहा है, राइट? या आई सेल ऑल द टैक्स, डोंट वरी. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लेट मी जस्ट डू इट हियर, ओके. सो ये क्या बता रहा है? सो 2018 18 टू 2019 क्यों ले रहा है फिर, एक सेकेंड. डेटिव इज देयर. So automatic not okay. So automatically we can't. Okay, let me just use that. Okay, thanks. Date diff. So in the orders, I need to take ship date. Orders, we have ship date. Okay, ship date. Uh, ship date dot date minus. Why I'm taking dot date? I'm telling you from that, just take a date. Okay. Minus orders. ORDRS orders. Order date. Why I'm telling minus here? Sorry. अभी तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? I want to say in month of day. Huh. Yeah. So thanks. Sorry. Date hard कर दिया हूँ. Fine. So this is your date def. Thanks. Update. Huh. So you can see here processing time. Okay. Can you see here processing time? So ship date minus order date. Okay. So this is what the formula. See, now don't concept formula. ये सारे आप चीजें बनाना सीखोगे. But right now you're learning something called calculated field. So whatever the field I have created. So what do you think? So this field will consume some memory for your table. This will consume, yes, right. तो इसको हम बोलते हैं calculated fields. So now if I go back to your report view, okay, you can see that calculated here order processing. Can देख सकते हो order processing, and you can see there is something called icon. Okay, आप special icon देख रहे हो. Okay, so this is your calculated column. Okay, very important interview questions. So what is the meaning of calculated column? आपका existing tables के अंदर आप एक नई columns बनाओगे. जैसे हम इस example के अंदर मुझे एक order processing का टाइम चाहिए होता, आई विल जस्ट क्रिएटेड बाय सम फॉर्मूलाज. ठीक है. सिमिलरली आई वांट समथिंग प्रॉफिट मार्जिन. सो प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है? सो परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट रिलेटिव टू योर सेल. तो आप इसको क्या करोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल करोगे. ठीक है. अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन जानना है, सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल टाइम्स 100. तो यू आर क्रिएटिंग सम न्यू डिराइव्ड कॉलम फॉर योर टेबल. सो इसको हम बोलते हैं व्हाट? कैलकुलेटेड कॉलम. Calculated column. ठीक है. So what is next one? There is something called measure. Okay, so there is something called measure. अब measure का मतलब क्या है? Okay, for example, so right now let me open some new sheet here. Okay, sorry, new sheet. And inside the orders, जो हम orders में काम कर रहे थे, right? So let me just, जो हमने previously calculate किया था, let me just delete this. So let me delete this from model, and even let me just delete this from model. Let me just delete this from model. Delete. Okay, so now you're learning something called measure. अब measure क्या है? So measure is like some metrics which you are calculating using
सम एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल हमारे यूज केस के अंदर यू कैन सी वी हैव सम ऑफ सेल्स. अगर मैं सेल्स को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको टेबल फॉर्मेट में सारा ही दिख जाएगा, राइट. सो यू कैन सी व्हाट इज योर टोटल सेल्स, ये सारी चीजें. बट आई वांट टू क्रिएट द सेम थिंग यूजिंग अ मेजर. तो मेजर क्या है, एक एक्सप्रेशन है. सो यू कैन सी डायरेक्टली विल गेट अ ऑप्शन हियर टू सी. जब इस पे आप होवर करोगे इट्स टेलिंग राइट अ डैक्स एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स अ वैल्यू फ्रॉम योर डेटा. आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या आप कोई भी टेबल का राइट क्लिक करके एंड यू कैन क्लिक ऑन न्यू मेजर. सो तीन ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन है क्विक मेजर, या न्यू मेजर, या दिस न्यू मेजर, एंड इवन यू कैन राइट इन द डैक्स व्यू ऑल्सो. अभी चार ऑप्शंस हैं. सो वन ऑप्शन इज योर न्यू मेजर. अगर आपको नया मेजर बनाना है तो आप इधर डायरेक्टली न्यू मेजर लिख सकते हो. ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इट विल एक्चुअली ओपन योर फॉर्मूला बार एंड अभी राइट नाउ इट्स एक्सपेक्टिंग यू टू राइट सम फॉर्मूलाज. ठीक है, जस्ट कैंसिल इट आउट. अगर दिस इज वन ऑफ द वे. सेकंड वे क्या है, सो अगर आपको क्विकली कोई भी एक मेजर बनाना है, सो इट्स लाइक अ हैंडी. इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. सो जैसे आप इस क्विक मेजर पे जाओगे यू विल गेट लॉट ऑफ सजेशंस हियर. सो लाइक इन बिल्ड मेजर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट स्टार्टेड. सो जैसे आप क्विक मेजर को पायलट, ओके इसमें कोई एरर दे रहा है. एनीवेज, सो क्विक मेजर ऑल्सो कैन क्रिएटेड. ओके, सेलेक्ट ए मेजर. जैसे मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है और मुझे कौन सा कैटेगरी है, सो कैटेगरी फॉर सम कैटेगरी कॉलम. ओके, सो इट्स लाइक अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग. सो जैसे आप इस पे सारे करोगे ऑटोमेटिकली द क्विक मेजर विल क्रिएट इट एंड शो इट इन योर टेबल. ठीक है, सो मुझे ऐसे नहीं चाहिए. सो दिस इज योर सेकेंड वे. लेट मी कैंसिल दिस आउट. ओके, सो क्विक मेजर. ओके, सी चेक अनचेक. सो जैसे आप इसको चेक करोगे और यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ हियर सजेशन, जहां पर आप सजेशन के हिसाब से आप बाय फ्लो आप क्रिएट कर सकते हो. अगर आपको नहीं चाहिए जस्ट क्लिक सेम थिंग. सो दिस फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, थर्ड इजिएस्ट ऑप्शन, आप उस टेबल पे जाओ, क्रिएट ए न्यू मेजर. अब मैं क्या बना रहा हूँ, सेम थिंग, आई वांट टू नो द सम ऑफ सेल्स. तो इसको मैं नाम दूंगा टोटल सेल्स. ओके, सो टोटल सेल्स. टोटल सेल्स. राइट नाउ यूर नॉट लर्निंग अबाउट द फॉर्मूलाज, यूर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, टोटल सेल्स. और टोटल सेल्स को लिखने के लिए पहले मुझे बताने पड़ेगा कौन सा मुझे क्या अग्रीगेशन काम करना है, क्या अग्रीगेशन यूज करना है. कौन सा अग्रीगेशन मुझे यूज करना है इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल सेल्स. सम, राइट, मुझे सम करना है. सो आई राइट हियर सम. और अब आपको मुझे बताना पड़ेगा लाइक व्हाट काइंड ऑफ डेटा, कौन सा डेटा टेबल है और कौन सा कॉलम है. तो मेरा ऑर्डर्स टेबल के अंदर हमारा एक सेल्स का कॉलम है. आई एम गोना राइट ऑर्डर्स. और इसके अंदर हमारा एक सेल्स का कॉलम है. यू गेट ऑर्डर सजेशन, क्लोज इट, एंटर. ओके, सो आप देख सकते हो यू गॉट सम न्यू आइकन हियर. सी, टोटल स्केल्स. ये आपका मेजर है. अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा. सो कैन सी व्हेन आई ड्रैग एंड ड्रॉप हियर आपको सेम आंसर दिखाई देगा. ओके, इफ आई गो एंड कन्वर्ट दैट इनटू सम कार्ड और समथिंग, सी सेम थिंग 2.3. ये आप कन्वर्ट कर सकते हो इन योर मिलियंस, विल गेट द सेम सेम आउटपुट है. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड कॉलम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड कॉलम एंड द मेजर. सो कैलकुलेटेड कॉलम आपके टेबल के अंदर एक नया कॉलम बन के आता है. ओके, विच इज एक्चुअली कंज्यूम सम मेमोरी इन योर टेबल. लेकिन मेजर कैसे काम करता है, सो मेजर विल नॉट take any new column in your table. So this will automatically gets calculated जब आप उसको यूज करोगे. इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट ऑटो कैलकुलेटेड. मतलब ये जब ये रन टाइम में कैलकुलेट होता है, जब व्हेन यू क्रिएट समथिंग इट इज जस्ट क्रिएटेड एंड सेव समवेयर. जब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इंटरनेट विल प्रोसेस इट एंड शो यू द रिजल्ट. सो दिस इज कॉल्ड दिस विल नॉट कंज्यूम योर मेमोरी. मतलब इसमें कोई मेमोरी स्टोरेज नहीं है, बिकॉज दिस विल बी गेट एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन यू कॉल इट, राइट. सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट मेजर एंड द कैलकुलेटेड फील्ड. सो आप हर एक टेबल के लिए दो चीजें बना सकते हो. एक आके कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हो, सी न्यू कॉलम, या न्यू मेजर बना सकते हो. सो न्यू मेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, सो इट्स लाइक अ एक्सप्रेशन. सो जब आप इस एक्सप्रेशन को बनाओगे सो इट इज सेव्ड इन योर टेबल एंड वो आप टेबल में नहीं दिखाई देगा. कैन यू सी हियर टोटल सेल्स, नो इट इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, लेकिन अगर आपके चार्ट के अंदर उसकी जरूरत है, आप क्या करोगे, यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर. सी, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे टोटल सेल्स एंड फिर देन यू कैन सी दिस एंड दिस गेट्स कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द रन टाइम. रन टाइम का मतलब क्या है, सो व्हेन यू ड्रैग एंड ड्रॉप उस टाइम पे वो कैलकुलेट करके आपको आंसर देता है. बट व्हाट इज अदर थिंग, दिस इज योर कैलकुलेटेड कॉलम, जो आप आपके एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम के हिसाब से भी एक नया डिराइव्ड कॉलम बनाओगे एंड दिस इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी. Okay, yes, this is your stored in your memory. Okay, so this is the two important concepts you should know before starting DAX. Understood what is the meaning of measure and what is the meaning of calculated column? Yes, so if I just write here the difference between this, let me write down. So abhi maine kya padha tha? So we have discussed about something called calculated column. Calculated column. So calculated column versus your measure. So what is your calculated column? So this expands your table
This expands your table by creating a new column. By creating a new column. तो आप एक नया कॉलम बनाओगे राइट आपके एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर. व्हाट इज मेजर? इट समराइजेस, मतलब ये आप समरी करेगा, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, सम कैलकुलेट कर सकते हो राइट. इट समराइजेस द डेटा इनटू वन सिंगल वैल्यू, इनटू अ single value. Correct? So next important thing. So it is stored along with table. तो जब आप table को देखोगे, it will see the new column there and it consumes the memory. Okay, it consumes the memory. But what about this? So this is calculated at runtime. So this is calculated at runtime, and it will store just a expression. Okay, just store temporarily, right? जब तक आपका रिपोर्ट के अंदर है प्रेजेंट है, इट विल जस्ट स्टोर टेम्परेवरली. अगर उसको निकाल रहे हो, इट विल गो ऑफ, इट विल नॉट स्टोरिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरी. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज लेस एनालिटिकल केपेबिलिटी. मतलब जब आप कोई भी एनालिटिक्स या बिजनेस के जो भी मेट्रिक्स बना रहे हो, एक कैलकुलेटेड कॉलम थोड़ा लेस केपेबल है, ठीक है, बिकॉज सो यू नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कस्टमाइज, बट ए मेजर इज मोर पावरफुल. सो दिस इज योर रिच एनालिटिकल केपेबिलिटीज. Okay, analytical capabilities. Fine. So this is your what? Measure. So next class we'll start continuation from here, and at least I'll show you many formulas, okay, how to write and expressions. तो उसके लिए at least just go through this. You create, at least build some reports, take data from Kaggle, अब सारा cleaning करो, ठीक है. Practice this, creating some new columns. So what I suggest is at least get some domain understanding ऑफ व्हाट, ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है. प्रॉफिट का मतलब क्या है, रेवेन्यू किसको बोलते हैं, नेट नेट सेल्स किसको बोलते हैं, ठीक है. सो जब उसको ये सारी चीज़ें पता चलेगी ना, व्हेन यू एक्चुअली राइट द फॉर्मूलाज यू अंडरस्टैंड. ओके, जब मैं कोई भी एक फॉर्मूलाज पढ़ूंगा, जैसे एम टी डी, वाई टी डी, ये सारे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है डैक्स के अंदर. तो उसको पढ़ाने के लिए यू शुड हैव द डोमेन अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको जैसे प्रॉफिट ही नहीं पता है, यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस, ठीक है, देन यू विल गेट टू नो. ओके, हाउ विल यू कैलकुलेट प्रॉफिट? Yeah, tell me the formula for profit. इसके अंदर है ऑलरेडी, बट if you want to create a profit, sales minus purchase, revenue minus expenses. Okay, so what is revenue, what is expenses? तो एक कंपनी के अंदर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस? सेकेंड लाइन, रिच एनालिटिकल केपेबिलिटीज. रिच एनालिटिकल केपेबिलिटीज. सेल्स एक्सपेंसेस, हाँ आई नो, बट मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स इनकम. कहाँ से आता है इनकम? इफ दे आर सेलिंग सम प्रोडक्ट दे गेट सम रेवेन्यू. ओके. व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस? हाँ, व्हाट इज एक्सपेंसेस? कॉस्ट टू मेक दोज प्रोडक्ट्स. ठीक है, हाँ, इनडायरेक्ट. ओके, गुड. कुछ लोग बहुत ही डिटेल में बोल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ओके, सो दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई वांट यू टू नो इट. ओके, इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड, प्लीज थिंक. ओके, अभी बहुत ही टाइम है, बिकॉज लर्निंग में डे वन से भी यही बोल रहा हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स आई टोल्ड राइट. सो आपको टूल्स नहीं पढ़ना है गाइस, ट्रस्ट मी. लर्निंग दिस पावर बीआई जस्ट टू ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्यू टू थिंग लाइक दिस. अगर आप इस सारे बना के दे दो, नो एनीवन इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड टू सी दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, नॉट एट ऑल. ये कोई भी बना लेगा, ठीक है, ट्रस्ट मी, ये कोई भी बना सकता है. इट्स नॉट दैट इजी. आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस मेट्रिसेस, आई वॉन्ट यू टू लर्न द बिजनेस, आई वॉन्ट यू टू लर्न. बिकॉज अगर आपको वो समझ में आ गया राइट, वेदर इट्स अ पावर बी आई, वेदर इट्स अ टैबलू, वेदर इट्स अ लुकर स्टूडियो, आप कोई भी प्लेस में हो, विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन द बिजनेस पार्ट. अगे बिकॉज एनालिटिक्स स्किल्स के अंदर ये बहुत ही वेटेज देता है, बिकॉज नोइंग द बिजनेस and understanding the business is very very important rather than learning how to open Power BI, how to save and how to open it. ये आपको नहीं सीखना है, ठीक है. how to, ये सारी, this is important, but more important than this is, see, अगर आपको वो नहीं पता है, if you are learning how to drag and drop this, do you think like it's any of the useful? No, right? So please start deciding. अगर आपने अभी तक decide नहीं किया है, not it, see, I'm not telling you to decide something, okay, it's about your interest. अगर आपको लग रहा है कि I'm interested in some sort of डोमेन, अगर आप यू आर कमिंग फ्रॉम सम हेल्थ सेक्टर, या आपके फैमिली में सारे हेल्थ के ही हैं, यू आर सम वे शोइंग इंटरेस्ट इन द एनालिटिक्स इन द हेल्थ सेक्टर, जस्ट गो एंड सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग दे आर बिल्डिंग इट. ओके, ट्रस्ट मी, विल गेट मेनी मेनी इन्फॉर्मेशंस. या सुंदर, यू सेड आर्ट्स बैकग्राउंड, या दैट्स व्हाट. सो मैं नहीं बोलूंगा प्लीज चूज दिस और चूज दैट, ऐसे नहीं बोलूंगा. अगर आप मुझे पूछोगे, आई कैन नेम सम पॉपुलर फोर, जैसे फिनांस, ओके, इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट. बैंकिंग, ये भी टॉप मोस्ट है. ई कॉमर्स, ओके, देन
हाँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इट्स क्वाइट पॉपुलर। बैंकिंग एंड जैसे ई कॉमर्स मैंने बताया, राइट, हॉस्पिटल, सॉरी, हेल्थ, ये चार पॉपुलर है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द ओपनिंग्स विल बी देयर इन दिस। तो इसके अलावा यस वी हैव स्पोर्ट्स ऑल्सो, ओके, वी हैव एजुकेशन ऑल्सो, ठीक है। इसमें अलग अलग सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग भी है, ठीक है। सो अलग अलग भी डोमेन्स भी हैं। तो व्हाट आई वांट टू डू इज, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, जस्ट गो एंड अंडरस्टैंड अबाउट दैट। आप केस स्टडीज पढ़ो। जैसे पावर बी आई has put some case studies on their what website, जहाँ पर वो समझा रहे हैं कि लाइक हाउ दिस सो एंड सो कंपनी आर यूजिंग द पावर बीआई। तो आपको सारे समझ में आएगा, लाइक हाउ द ऑपरेशंस इज गोइंग ऑन, मतलब ये सारी चीज़ें, हाउ दे आर यूजिंग दिस एनालिटिक्स टू क्रिएट समथिंग, राइट। ट्रस्ट मी, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड हाउ वी एक्चुअली थिंक ऑफ। तो इसलिए मैं हर हमेशा बोलता हूँ, कम आउट ऑफ दैट सिमुलेशन, ये सारा सिमुलेशंस है, ठीक है। गो एंड चेक इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, आपको मिल जाएंगे, विल गेट लॉट मेनी आइडियाज लाइक हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन द रियल कंपनीज, राइट। So that bring that, okay, just bring that in your learning aspects, मतलब जो आप सीख रहे हो, try to create a similar, okay, tomorrow if you go for interview, right, trust me, you will be like more confident। अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर जा रहे हो, अगर आप फिनेंशियली जा रहे हो, ठीक है, तो you'll have जब आप जाके सारे मेट्रिक्स बोलेंगे, सर दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड एंड दिस व्हाट आई हैव सीन, दिस व्हाट द रिपोर्टिंग हैव डन, ओके। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन के बारे में पूछ रहे, फिर एबल टू आंसर इट, राइट, दे हैव अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग हाइट फास्टर, right? So if you learn Power BI SQL, but you don't know anything about finance and applied to finance, do you think they're going to hire? No. Okay, no one will hire you and teach you, right? So better just stick to some. अगर आपके पास ऐसे कोई choice नहीं है, you are just joined for the sake of like very good salary or something like that. Just explore two or three domains. ठीक है. So at least by next week, okay, when you come, I want you to create at least 5 6 reports. Will you do it? एटलीस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ 5 6 रिपोर्ट, जहां पर आप एक रेप्लिका बनाओ, डाउनलोड डेटा फ्रॉम कैगल। कैगल से में आपको एक रेप्लिकास मतलब बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। आप देख के बनाओ, एटलीस्ट देख देख के बनाओ उन्होंने कैसे बनाया है। ओके, विल यू डू इट? ओके, सो फ्रॉम दिस एटलीस्ट विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फो। यार इन यू वाज अबाउट द शॉपिफाई, राइट? सी शॉपिफाई के लिए आप क्या कर सकते हो, सो गो विथ फाइव ट्रेन, बिकॉज फाइव ट्रेन में आपको कनेक्टर देता है, ओके। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, सी डायरेक्टली आप इधर टाइप कर सकते हो, जैसे फाइव ट्रेन एंड शॉपिफाई कनेक्टर, ठीक है। सो अभी क्या करेगा, आपको सारे डिटेल इन्फो देगा, लाइक हाउ टू मेक अ कनेक्शन। और कनेक्शन बहुत ही सिंपल होता है, जस्ट यू नीड टू जस्ट लॉग इन। जैसे आप लॉग इन करोगे, राइट, प्रोवाइड द प्रॉपर शॉप नेम, यूजर नेम, पासवर्ड्स, ओके, प्रॉपर अगर आपका सेटिंग है, राइट, ईजी से आप ऐड कर सकते हो। सी, दिस इज हाउ यू नीड टू गो एंड इंटरेक्ट। जब आप शॉपिफाई से डेटा लेके आओगे, राइट, इन योर स्नोफ्लेक, एंड स्नोफ्लेक से जब आप पावर बीआई को कनेक्ट करोगे, सो दिस इज व्हाट द डेटा विल लुक लाइक। ओके, सो देन यू विल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक आप सिमुलेशन से बाहर आ चुके हैं। सो दिस इज हाउ योर रियल वर्ल्ड एक कनेक्टर का दिख रहा है। अगर मैं इससे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सो यू शुड बी एबल टू राइट दैट सीक्वल क्वेरीज, यू शुड बी एबल टू राइट दैट सम सॉर्ट ऑफ मैट्रिसेस, यू शुड बी एबल टू बिल्ड अ रिपोर्ट ऑन दिस। एंड ट्रस्ट मी, ये सारा रियलिस्टिक है। इफ यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, इफ यू पुट इट इन द रेज्यूमे और द लिंक्डइन और समवेयर, अगर आप मार्केटिंग से बिलोंग करते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, अगर आपने बोला, जी अगर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यू कैन डू इट, दिस इज नो वन हैज डन सो फार, नो वन, इन द सेंस इट इज मोर डिफिकल्ट। ओके, सो कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स क्या फेस करते हैं, दे आर रनिंग द एड्स इन फेसबुक, दे आर रनिंग द एड्स इन टिकटॉक, दे आर रनिंग द एड्स इन योर मेटा, दे आर रनिंग द एड्स इन यूट्यूब, मतलब अलग अलग प्लेस में रन कर रहे हैं। बट दे वांट ए यूनिफाइड डैशबोर्ड, जहां पर बता सकते हैं कि कौन सा उनका एड अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कौन सा एड्स है। ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये अभी तक ऐसे यूनिफाइड सिस्टम्स नहीं बना है। वाई? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्कीमा डिजाइन। यूट्यूब का अलग स्कीमा डिजाइन है, मेटा का अलग स्कीमा डिजाइन है, और इनके अलग कॉलम्स है। जब हम दोनों को मर्ज कर कोशिश करोगे, राइट, विल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी, इट्स नॉट दैट इजी टू मर्ज इट। ओके, इसको हम बोलते हैं एम। एनीवन नो? इसको हम बोलते हैं व्हाट? एम। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम इन एनालिटिक्स? ओके, एनी नो व्हाट इज एम इन एनालिटिक्स? ओके, इसको हम बोलते हैं मिक्स मार्केटिंग मॉडल। ओके, क्या है? मिक्स मार्केटिंग मिक्स मॉडल। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ what the service based companies get, Infosys, Wipro, ओके, ये सारे क्या करते हैं? सो देर आर सम स्टैंडर्ड एम मतलब बेस्ड कंपनीज, जहाँ पर ये सारे इंसाइट्स आपको कंपनी के बेसिस पे बना के देते हैं। आई थिंक इन इंडिया देर आर वेरी लेस कंपनी हु डूइंग दिस। ओके, सो विच विल हाउ एम वर्क्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। रिग्रेशन एनालिसिस ये भी एनालिटिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। इट्स मोर ऑफ एडवांस एनालिटिक्स। ओके, सो इफ यू आस्क लाइक व्हाट इज एम, ओके, व्हाट इज so just see here, ये क्या मतलब what is trying to say? Sometimes see mixed modeling, independent.
हाँ मतलब ये बेसिस बोल रहा है बेस्ड ऑन द क्लेक्सी। एक यूज केस है जैसे कॉम्प्लेक्स एग्रीगेटेड डेटा लेके आते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एंड दे वांट टू सी हाउ इट इज परफॉर्मिंग। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ओके, जैसे हम इधर बोल रहे हैं राइट, इफ वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। सो ट्राई टू इंटरेक्ट विथ मोर रियलिस्टिक टूल्स। आप जाके थोड़ा गूगल एड्स भी देखो। हैव यू ओपन द गूगल एनालिटिक्स? अभी आपने गूगल एनालिटिक्स ओपन किया है, ठीक है? सो जस्ट गो एंड सी गूगल एनालिटिक्स। ओके, सो why people will hire you to build a reports? Google Analytics इतना अच्छे से एनालिटिक्स करके देता है। सो ऑल योर गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक ही प्लेस में सारा एनालिटिक्स आप देख सकते हो। आपके वेबसाइट्स, आपके गूगल के एड्स, गूगल मतलब देर आर यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। उनका एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है कॉल्ड एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स। ओके, जहाँ पर आपको हर एक एनालिटिक्स देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्ट्स। ओके, सो व्हाट यू सी हियर, इज इट मोर रियलिस्टिक? इज नॉट रियल टाइम एनालिटिक्स। अभी कोई एक वेबसाइट के अंदर वो दिखा रहा है कि लाइक हाउ मेनी कस्टमर्स आर एक्टिव, ओके, सो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली यूजिंग, ओके, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। जैसे अब यूट्यूब हमारा देता है राइट, सो डू यूट्यूब एनालिटिक्स, राइट? सो हाउ मेनी एक्टिव यूजर्स हैं, कितने यूजर्स हुए हैं, ठीक है? एवरी हर एक चीज देखिए, यू कैन सी लाइक हाउ डिटेल्ड रिपोर्टिंग दे हैव डन। व्हाट काइंड ऑफ चार्ट इज दिस? कैन टू क्रिएट इन पावर बी आल्सो? पावर बी में बना सकते हो। सो ऑल दिस इज जस्ट योर बार ग्राफ। ये आपका बार ग्राफ है, ओके? सो ये आपका कौन सा लाइन चार्ट वर्सेस कॉलम बना सकते हो, ठीक है? सो व्हाट दिस ऑल योर लाइन ग्राफ्स, ओके, लाइन ग्राफ। Okay, the point here is what I'm trying to show here is there are many more tools जहाँ पर आपको ज़्यादा exposure मिलता है in terms of realistic. Okay, please go and explore that kind of tools. Okay, and try to, that's what domain का आप connect करो, automatically this comes in the picture. ओके, सो प्लीज डू इट। ओके, सो जैसे एनालिटिक्स इसका भी अलग से आप पढ़ सकते हो। सो अगर आपने इसको पढ़ा है राइट, तो देर आर चांसेस दैट पीपल आर लुकिंग फॉर द मार्केटिंग टीम एज एनालिस्ट आपको हायर कर लेंगे, बिकॉज यू नो दिस, यू नो द हाउ दिस गूगल एनालिटिक्स वर्क, ठीक है? तो रियलिस्टिक टूल्स बोल रहा हूँ, जैसे जैसे सी आर एम्स या ई आर पीज, ऐसे कुछ पॉपुलर टूल्स हैं, एनालिटिकल टूल्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे प्लेसेस में यूज़ किया जाता है एंड यू नो दैट एंड गॉट अ सर्टिफाइड फॉर दिस, ठीक है? जैसे पावर पी आई, जो आप पावर पी आई पढ़ रहे हो इसका सर्टिफाइड भी होता है। इसके खुद का एग्जाम होता है, यू नीड टू गो टू सेंटर एंड राइट क्रैक योर एग्जाम एंड यूल गेट अ पावर बी आई डेवलपर सर्टिफिकेट, ठीक है? ऐसे भी होता है। सो इफ यू गेट दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन एंड पुट इट राइट, विल बी हैव ए मोर कॉन्फिडेंट इन वर्किंग एंड गेट थ्रूइंग द टॉपिक्स। ओके, got it? No, no, Manshri, we don't have anything. I hope you'll work around this, right? So please think, start thinking. Okay, so there are a lot many things, guys. ठीक है, एक या दो चीज़ नहीं है. So trust me, what I'm telling it's very true. You are in very early stage as a student. Okay, so start learning. There are many things which is changing, right? So please keep learning, keep growing, and never think of learning 100%. Okay, so that will day will never come. Always keep upscaling. आज हमने कुछ पढ़ा है, try to keep learning many things so that you will be more confident in using that particular tools. Okay, so आज का जो resources है I've just updated. So DAX का इसमें सिर्फ दो ही definition है. I'll save this. So next week इसका save करेंगे. It's the only definition. ठीक है, so I'll write it and we'll share that. Okay, DAX का I'll share it properly. Fine. So let me just share this sheet once time and we'll end it. Okay, ठीक है, bye. Bye. Oh, you can go and check Power BI documentation, Parvesh. Okay, you can go and check like this. You can go and just type here Power BI case studies. So this case studies is from the Power BI itself. Okay, it's not something someone has created. You can go and open their official case studies portal जहाँ पर उन्होंने खुद से दिया. Okay, Power BI, Microsoft. See Power BI, हाँ, जैसे एक विजॉन सोल्यूशन है। सो विजॉन सोल्यूशन इज समथिंग जहाँ पर इट्स वन ऑफ द कंपनी वे दे यूजिंग पावर बी आई। सो दे हैव ए कंप्लीट हिस्ट्री अबाउट लाइक हाउ दे आर डूइंग इट, आई मीन लाइक हाउ दे आर यूजिंग द पावर बी आई इन देयर बिजनेस। तो इसमें से आपको पता चलेगा कि लाइक ऑल द डिटेल्स, मतलब हाउ दे आर गेट स्टार्टेड, मतलब हाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हेन दे इंटीग्रेटेड द पावर बी आई, लाइक व्हाट ऑल प्रॉब्लम दे सॉल्व इट, राइट? ये सारी चीज़ें विल गेट टू नो अबाउट द बिजनेस। फाइन, ओके, ठीक है, सो विल मीट नेक्स्ट वीक, प्लीज कीप